monetary policy, and then some current affairs. So I think the questions were again easy, huh? Easy the? Nahi? Kuch questions difficult the. Okay. So questions were actually informative. Okay, more than conceptual, they were informative. So वो चीज़ आपके at this stage that seems to be the most difficult thing when there is new information. But addition is quite easy because that is important. Something important has been asked, and even if you make the mistake, finally after knowing that, you will be knowing it. Okay, so after attempting, you will come to know about that thing. Okay, so let's see this question. That is with reference to central bank digital currency. This is about CBDC. Consider the following statement. It is possible to make payments in digital currency without using US dollar or SWIFT system. Okay, that is one thing, that it is decentralized, and one effect of that would be that it can also go on avoiding these channels. Okay, so that is very much correct. A digital currency can be distributed with condition programmed into it, such as a time frame for spending it, just like any digital coupon that you use. Okay, you have that time limit under which that can be used. So I think that was easy. Please. See, just look at the process through which this is mined or constructed. Okay, so it is very easy thing on part of the issuer to program it in such a manner whereby it will be having a particular date after which it will expire. So this is not difficult at all. वो तो आप अपना कंपनी खोलें, उसमें कुछ वाउचर्स निकालें, उसका भी कर सकते हैं, because ultimately it is in digital form. It is not something which is tangible that you can touch and it will be there because it is metallic, है ना? तो बहुत आसानी से किया जा सकता है. So what was the problem in selecting it? Okay, okay. But here it is, maybe you might have studied about e-rupee and then the features. Getting it? Maybe in that list you did not find it. But see, currency can be distributed with condition. This was quite easy to infer, है ना? ये language देखो इसको, can be. Yes, it can be. Why do you think that this is not possible? Okay, so on the basis of something that you studied, ऐसा आपको लगा कि ये क्या हो रहा है? Okay, ऐसा आपको लगा this is actually the picture, no? Okay. Okay, so don't you think that the very language makes it easy, that currency can be distributed? Okay, so even if you have not read it as a special point in reading about e-rupee, I think you should have inferred that this is quite easy to do. Okay, with reference to treasury bills, consider the following. Okay, so you have government securities की बात हो रही है यहाँ पास. Okay, so you have dated securities, treasury bills, cash management bills. Yes or no? So these kind of things, these are all government securities. So T-bills are zero coupon bonds. Zero coupon means no interest. Very good. Zero coupon. Hai na? Zero coupon bonds. So that is correct. State governments do not have the authority to issue T-bills. Okay. So that is one, because they have these dated securities option. Yes or no? Retail investors are not eligible to purchase T-bills. They are eligible to purchase. Banks can use T-bills to meet their SLR. Ultimately, these are G-Secs. So in SLR, you see that you have G-Secs, cash, and gold. So G-Secs can be of any kind. Okay. Again, these are आप मेरे ख्याल से आप आंसर कर सकते हो इसको. Okay, जो ऑप्शंस कौन सा सही है, कौन सा गलत है. But you can ask. Okay. Okay, which among the following best describes the concept of liquidity trap in an economy? Okay, okay. So this is directly प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या होता है? इशूअर एंड सब्सक्राइबर. प्राइमरी मार्केट में हमेशा इंटरेक्शन होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का. ओके, और बाकी आरबीआई ने रिटेलर्स को अकाउंट होल्ड करने के लिए अलाउ ही कर दिया है. सी दिस ऑप्शन called liquidity trap. This is there in the economics NCERT also. Okay, and they haven't asked it yet in prelims. Okay, so they can ask it. Okay, so the liquidity trap, easy to define. Anyone? It was easy to answer. Just tell me the situation. See, understand that many of the concepts that you know, even as simple as GDP, they actually originated at a time when there were crises. Okay, the economics developed as a discipline in times of crisis. Like political science. Okay, so ये इसमें हुआ क्या कि एक डिप्रेशन का टाइम आया, and then there were suggestions. Okay, go for more expansionary monetary policy. Okay, so that people would be encouraged. But then in the time of those tough times, people choose to save more. So more liquidity, more saving, and then that is not going to propel the economic growth. That is what you know as
liquidity trap. Liquidity trap. Okay, so the statement that describes it well is a situation where interest rates are so low because of the expansionary monetary policy that expansionary monetary policy becomes ineffective in stimulating economic growth. So further adoption of expansionary monetary policy is not going to help the economy, and that is why it is being called a trap. Okay, so that is the point. Further, आप समझिए इस चीज को कि what is the easiest way before the central bank to boost the economy? Expansionary monetary policy. See, man, liquidity, MS बढ़ेगा, MS demand बढ़ेगा, demand के बाद production बढ़ेगा. Okay, production बढ़ रहा है, that is as growth. Okay. In an economy, the bond yield decreases during the period of recession. Okay, so recession, negative economic growth, technically defined as negative economic growth in 2 successive quarters. Okay, you can simply call it very low economic growth, negative economic growth. Production is decreasing. Okay, during the economic recession, investors tend to sell equity shares and prefer to purchase the bonds. So if economy is not doing well, what is the basic difference between this share security, equity security, and bond security? Okay, depending upon your risk profile, you choose either equity or bond. If your risk profile is such whereby you cannot afford much risk, what do? You go for bonds, है ना? Bonds. ये understanding है, बाद में काम आएगी, कुछ questions हैं. So during the economic recession, अब आप companies के share तो खरीदोगे नहीं? Recession के time में you will sell the shares, no? Yes or no? Why you will sell the shares? Because you think that the companies are not going to do good. Simple. So what you will choose to do? So जमीन खरीदेंगे, हाँ? नहीं, gold खरीदेंगे. You will buy land, gold, but those are physical assets. Which financial assets you will choose? Instead of buying gold, you will choose sovereign gold bond. Huh? Yes or no? Or you can also say inflation index bonds. Yes, that is another financial asset you will choose. Why you will choose that? Because it provides cushion against this crisis or inflation. है ना? ये सारा कुछ. So bond is a safe instrument. You will choose to buy more and more bonds. Yes or no? Now, increasing buyers of bond will lead to increase in the price of bonds. Lower interest, lower yields. Simple hai? Yes, sir. Okay. Which one of the... Okay. Okay, less money to invest. But still you'll be having money. And now what you will do with that money? That is the question. I am ready to listen to all your arguments because I know that in prelims, the way you think matters a lot. Even some of the best candidates fail to crack it, not because they know less, but because they think incorrectly. पहले तो वो गलती की वहाँ ई-रुपी वाले में, मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वाले में सही किया था. चलो ठीक है, ये सही है. Okay. So you think that during economic recession, investors tend to sell equity shares and prefer to purchase the bond. So you thought that during the time of recession, people will not be investing at all. So what they will do? There will be reduction in investment collectively at the level of economy. What people will do with their money? Just because there is recession doesn't mean that they will stop eating. Yes or no? They will be having some money. Yes or no? Now they have to choose the alternatives. They will go for the safest option, that is bond. Decrease in savings. Yes, there may be. See, there will be multiple factors that may lead to decreased saving in recession. Because understand, during the time of recession, which kind of sentiments actually prevail, ये भी matter करता है. जैसे liquidity trap क्यों आया? Liquidity trap ये आया क्योंकि economy अभी liquidity trap arises because people think that economy is not going to do well in near future. Getting it? And that is why they are not willing to invest more, give money to companies. Although that is what central bank is trying to persuade you to do. Getting it? So a lot depends upon that. But no direct link. ऐसा कोई question भी आपसे नहीं पूछेगा. Okay, so this is fifth. This was very much in news. News नहीं मैं कहूँगा, columns वगैरह में लिखा गया है काफी. Okay. After COVID, so post-pandemic scenario में, many columnists mentioned this term. Okay, and they
asked it. The team asked it this question. So greedflation was actually being discussed by columnists in the context of these issues that were arising, global supply chains or hurdles in transportation and all, and companies citing the reason that these are actually the factors which are increasing the price. But they were overstating, according to columnists, they were overstating these factors. इतना भी नहीं global supply chain में दिक्कत थी कि price इतना बढ़ जाए. So they are actually trying to use these excuses to make more profit. And that is why the prices are increasing disproportionately. It is not in proportion to the problems that are there in global supply chains or other hurdles cited by the companies. Are you getting this? So corporates की greed की वजह से inflation, greedflation. Simple है? छूट गया क्या? बताइए. ओके हाँ. सी व्हाई यू स्टॉप्ड? पूरा सेंटेंस तो बोलो. बॉन्ड अच्छा प्राइस इंक्रीज करेगा इस वजह से लोग खरीदेंगे नहीं. दैट इज व्हाट यू आर थिंकिंग. हाँ, प्राइस इंक्रीज क्यों कर रहा है? बिकॉज पीपल आर बाइंग. आर यू गेटिंग दिस? दिस इज द लिंक. ठीक है, सोचने का तरीका बहुत सिंपल रखो, बहुत ज्यादा उल्टा सुल्टा नहीं सोचना. इकोनॉमिक्स में गलतियां इस वजह से भी होती हैं कि आप कुछ ज्यादा सोच लेते हो. ठीक है ना? अरे तो बिल्कुल करेक्ट है ना. हाँ बिल्कुल सही कर रहा है, तो यही तो लिखा हुआ है. देखो ये सी सेट वाली मिस्टेक ना करो. मिसरीड, दिस इज लेवल 2 नाउ, सो यू शुड बी हैबिचुअल ऑफ रीडिंग इट करेक्टली. ओके ओके. हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स. ठीक है, अब सपोज यू हैवंट स्टडीड इट एज पार्ट ऑफ फाउंडेशन और समवेयर. अब दिक्कत ये होती है कि अब ये नया टर्म आ गया एडिशनल टियर 1. तो यूपीएससी में ध्यान रखना कि क्वेश्चन कहाँ खत्म हो रहा है. क्वेश्चन यहाँ पास एडिशनल टियर बॉन्ड्स में नहीं खत्म हो रहा है. क्वेश्चन खत्म हो रहा है डी में. नन लिखा हुआ है ना, नन के ई में क्वेश्चन खत्म हो रहा है. ये ध्यान रखना इस चीज को. हाँ हाँ, क्वेश्चन वहां है खत्म. हमेशा ये बिल्कुल दिमाग में ध्यान रखना. प्रीलिम्स में क्वेश्चन की लाइन नहीं है. क्वेश्चन यहाँ बिल्कुल खत्म हो रहा है जाके. तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ो. आप यहीं से डर जाओ कि अरे यार ये क्या आ गया. कोई एनिमल का नाम लिख देंगे, कुछ 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 ऐसा नेशनल पार्क की बहुत पढ़ा तुमने, वो वाला नहीं पढ़ा. इससे डिसाइड नहीं होगा कि तुम ये क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं. Prelims में this will not decide. This statement will not decide whether you are able to do this question or not. Okay, just remember this. Okay, just see the story of 81 bonds. हुआ क्या कि this global financial crisis was there, and after that Basel Convention suggested some additional measures whereby banks can keep themselves well capitalized. Okay, so giving them this option to issue bonds which will not be having any maturity. Okay, which will not be having any, क्योंकि maturity होगी तो फिर maturity period के बाद पैसा देना होगा. They will have to return money. Okay, so in this way they can just go on issuing those bonds. Those bonds can also be converted into equity. But some rules of the convention, this particular provision that was introduced, were keeping the subscribers of the bond at loss. What was those provisions? जैसा कि बोल दिया कि at the time of recession, banks can go on even writing of those bonds. Okay, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई. This is the story of 81 bond, है ना? Okay, so just see this. 81 bonds usually lack a defined maturity period. Very much correct. 81 bonds are backed by banks' core capital reserves. If they would have been backed by banks' core capital reserves, then that would mean what? Banks has so much capital that it is issuing bond. Getting it? So why they would have needed to issue this bond? Why Basel committee would have considered it necessary to allow them to issue those bonds? Okay, so this is not the case. 81 bonds cannot be traded in secondary market. So many steps are taken to actually promote the secondary market. Getting it? Because if they cannot be traded on secondary market, that is going to further discourage the investor to subscribe it. Okay. And also remember the structure, the very structure of 81 bond is such that the attempt would be to encourage more and more investors to buy it. Okay, to create the market. So I think that is something that now you can say that only one statement first is correct. Okay. Okay, with reference to Monetary Policy Committee in India, consider the following statements. MPC is responsible for setting the benchmark interest rate. Very basic information. The decision made by Monetary Policy Committee are binding on the central bank.
That is the purpose. There shall be at least 4 meetings of MPC organized in a year. With a notice period also. That has to be given. So, basic hai. Okay. With reference to commercial papers, consider the following statements. So, during the course, foundation course, where do you find commercial paper appearing first time? Tell me. Securities jab padhte ho. Yes? Commercial securities ke point. Okay? I think you study that when you study about the quantitative credit control measures. You study that when you study base rate. No? Base rate kya tha? Base rate, what is base rate? Long-term lending. Base rate. बेसल नॉर्म्स आप पढ़ते हैं अलग जगह, ये पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में. रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट. बेस रेट नहीं. The rate at which banks borrow money from RBI against their first class securities. Okay. Those first class securities include commercial bills, commercial papers, certificate of deposits. Okay. And there you study it. And all these securities have a maturity period of 1 year. Okay. So I think they are secured financial instruments. Are they? Neither of them. Okay. Commercial bill bhi secured nahi hai or commercial paper bhi nahi hai. So unsecured hai. They have maturity period varying from 1 year to 10 years. Incorrect. Non-resident Indians and foreign institutional investors can subscribe to commercial papers. Very much. Why? They will not be allowed. Okay. So third statement is correct. Okay. Please. Okay. The question is, what is the significance of these instruments being unsecured? Okay. So just for example, commercial bill की अगर बात करें, ये commercial paper ही रख लेते हैं. So this typically happens in this manner. Understand that there is this Tata Motors or any company, Reliance, कोई company है. These are going to be issued by high net worth companies. Getting it? And they don't have money now. They don't have money. They don't have money to finance this particular thing. They have a lot of money. They are high net worth companies, but they have invested all other money somewhere else. Now, this company, which is a high net worth company, needs 25 lakh rupees or 50 lakh rupees from a bank. So what it will do, it will issue commercial paper of 25 lakh rupees to SBI. SBI will purchase or subscribe to this commercial paper at a discount. So SBI will give 22.5 lakh rupees if 10% is the discount. Okay, with maturity period of 1 year maximum. Okay, so company, high net worth company issuing commercial paper because it needs 25 lakh rupees at this moment. Now, it is not secured because anyway it has to be honored. And it is high net worth company. So it has a lot of assets. So if it reaches to a point whereby it is not able to honor it, some asset of the company will be sold to honor this, to enforce this particular thing. Okay, and SBI is able to make 2.5 lakh rupees in this transaction. The point was that what is the significance? The significance is this: the high net worth company doesn't have to provide a collateral against this particular loan activity that is happening. It is actually a lending that is happening, yes or no? Lend kiya na 22.5 lakh rupees. After 1 year, this company is going to give 25 lakh rupees without a collateral. No risk, actually, it is high net worth company. So SBI is going to subscribe to it very easily. Bilkul, it cannot be issued by all high net worth company. That is why it is called first class corporate security. And it is against this security SBI can ask RBI to lend. As first class corporate securities are those securities which can be pledged in this manner. Okay. And then SBI can use the same commercial paper to borrow from RBI.
And here it was discounted first time. When SBI is going to use CP to borrow from RBI, that is going to be a second time discount. And for the same reason, base rate is also called a rediscounting rate. Discounted here and discounted again. Okay, 9. Okay, with reference to unified payment interface, consider the following statement. Transactions conducted by UPI are irreversible under any circumstances. Now made reversible? Very much? Yes or no? There exists no minimum threshold on the amount of money transactable through UPI. Okay, so I think second statement is correct, first is incorrect. Information, है ना? Question 10. She was the ruling queen of Gondwana. So Queen Durgavati, है ना? Yes, now coming to this. With reference to convertible bonds, consider the following statement. Convertible bonds are called convertible because they can be converted into equity. Okay, now you have this freedom to convert it into equity. Then इसमें कुछ तो नुकसान भी होगा. There will be some flip side also. So what is the flip side here? In form of bonds, they will not be offering that much returns that you can expect from any other bond. Yes or no? Okay, so if there is an option to exchange the bond for equity, convertible bonds pay a lower rate of interest. That is correct. The option to convert to equity affords the bondholder a degree of indexation to rising consumer prices. Indexation to दिक्कत है क्या इसमें? अच्छा चलो ठीक है हटाओ इसको. Degree of indexation to rising consumer prices. Indexation का मतलब कि consumer price rise कर रही है उससे index हो जाएगा आपका return. Getting it? How? Okay, those who understood it, tell me how. See, the very design is such. Very good. In equity में convert हुआ तो जब inflation बढ़ रहा होगा economy में, it is likely that the price will increase. Companies will be doing better. Price of shares will increase. You can readily convert it into shares and can index it or can get the returns which are indexed. Bond का fixed होगा. एक freedom मिली आपको. You can convert it into equity. Now inflation is there. Okay, a moderate to good level of inflation is there. You can readily convert it into equity, and equity's price will be increasing. Okay, if you would not have this freedom, then you could not have converted that into equity. And if in that case inflation would have been increasing, then you will not be able to get anything because of inflation. Okay, or from inflation. Equity में convert किया, equity की price बढ़ रही है तो आपको उसके price मतलब you bought SBI share, let us say, and SBI shares price are increasing. That is good news for you or bad news for you? Good news, huh? So if you have the freedom to convert it into shares and the price of shares are increasing, don't you think that your returns are indexed with the rising prices? Getting it? Please. That is another thing, inflation index bond. This indexation is arising because of the structure. And inflation index bonds का मतलब होता है returns plus inflation. Okay. And that is why you're saying that there is a degree of indexation. It is not fixed. Getting it? Maybe equity जिस equity में आप convert किया है हो सकता है उसका price ही ना बढ़े. Very much inflation. It is always a real interest rate that you actually experience. It is never nominal because inflation is a reality that you cannot avoid. Okay. In context of Financial Services Institution Bureau, last year, current affairs में पढ़ा होगा, है ना? Is an autonomous body. पहले statement में आ जाओ सीधे. FSIB is an autonomous body that replaced the Bank Board Bureau. Okay? Correct है. The governor of RBI is the ex officio chairman of FSIB. ठीक है, अगर RBI को ये सब इतना मैनेज कर लिया ना होता, तो why we would have needed that? Getting it? So यहाँ पास गवर्नमेंट अपॉइंट करती है चेयरपर्सन को. ओके, so government appoints the chairperson. Okay, with reference to difference between cash reserve ratio and statutory liquidity ratio, consider the following statements. CRR, percentage of NDTL banks keep with RBI in form of cash, not earning interest, because it is a liability on RBI. Don't you think?
CRR is a liability on RBI? Yes or no? CRR is a liability on RBI or not? It is very much a liability on RBI. भैया किसका पैसा है वो? बैंक का. किसके पास रखा है? किसके पास रखा है? RBI के पास. But RBI की खासियत क्या है? It does not pay interest on its liabilities. Okay. So CRR funds are kept with RBI while SLR funds are kept with bank themselves. Very much correct. Okay. CRR is mandated under RBI Act while SLR is mandated under Banking Regulation Act 1949. Mandated. बिल्कुल सही लिखा हुआ है. Okay, this is the case. It is mandated under these and these acts. Okay. Third, CRR is mandated. Third, banks can earn interest from funds kept at SLR because there is GSEC there. है ना? SLR में क्या है? Cash, gold, GSEC में interest होता है, but not from funds kept as CRR. I told you that RBI does not provide any interest there. There is statutory upper limit on SLR, but not on CRR. So in 2006, that was the case. Limits were revised. Actually, there is a limit on CRR also. Okay, but that limit is 0 to 100%. 100% is not actually a limit. Okay. Okay. Consider the following. Certificate of deposits. क्या लिखा है? How many of the above are issued by commercial banks in India? हाँ, तो certificate CDs are issued by the commercial banks, just like FDs, है ना? FDs. What is the difference between CD and FD? CD में नहीं होता है. CD में भी इंटरेस्ट होता है. CD में ज्यादा इंटरेस्ट होता है. FD में ज्यादा होता है. CD में ज्यादा होता है, FD में ज्यादा होता है. अरे ये तो बैंक के ऊपर डिपेंड. हाँ भाई, what is the basic difference? You tell me. Basic difference between CD and FD. Fixed deposit and certificate of deposit. You got the question incorrect. I'm not asking this question. I'm asking my question. CD and FD में difference क्या है? अच्छा, period define होता है. CD is negotiable. Okay, you can go on selling your CD to someone else. अब आपने FD किया है तो आप मेरे को दे देंगे FD? नहीं. तो आपने 50,000 का CD किया है. You are going to get 60,000, let us say, after 2 years. You can sell me at 55,000. Commercial papers by corporations होते हैं. ये उसकी तरह नहीं होते. Cash management bills, I told you, kind of security, D6. So commercial cash management bills are issued by whom? I told you by government, but government does not do that on its own. So by RBI on the behalf of government. Treasury bills, again by RBI on behalf of government. अरे तो इसमें एक ही है ना, जो बैंक्स के होता है, वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. Okay, this you know that I think you can do that, huh? बोल मत देना कि डिस्कस नहीं किया. आसानी से होने वाला चीज है, कुछ है ही नहीं उसमें. 16. With respect to small finance banks, consider the following statement. Small finance banks, और दूसरा कौन सा है? नाचिकेता मोर कमेटी के जस्ट बाद आया था, पेमेंट बैंक्स. हाँ, so they are the examples of 15th का आंसर गलत है. हाँ, India recently signed accord, correct? It is legally binding agreement. Legally binding का ऐसा ये लूनार एक्सप्लोरेशन का लीगली बाइंडिंग मतलब it doesn't make any sense. I think common sense से ही करेक्ट कर लेते. 15th I'm talking about. You could have applied your common sense. How it can be? No. Okay, just okay. Coming to 15 now. With reference to Artemis Accord, consider the following statement. India recently signed accord, correct. It is legally binding, incorrect. Third statement, it aims to strengthen the collaboration between nations for future lunar exploration. Correct है? हाँ. अरे भैया वो लूनार एक्सप्लोरेशन किसमें काउंट करोगे तुम? अरे नहीं, जस्ट स्टडी दैट. इसको आप अपने से, हालांकि करंट अफेयर्स में डायरेक्टली मेंशन है, आप यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट. कमिंग टू दिस क्वेश्चन,
With respect to small finance bank, consider the following. So आपने differentiated banks का concept पढ़ा है, उसमें से small finance bank के बारे में पढ़ा होगा. They are not required to maintain a minimum CRAR. This is incorrect. CRAR bank, huh? So this is incorrect. They are actually required to maintain more CRAR than commercial banks. Okay, around 15%. So yes, that is the point. Then they are required to extend 75% of their adjusted net bank credit to priority sector lending. Okay, so along with regional rural banks, they have this requirement of 75%. Okay, at least 75% of their loan portfolio should constitute loans advances up to 25 lakhs. So, ये statement correct है incorrect है? What is the purpose of having this? आप मतलब जैसे समझिए कि advances up to 25 lakhs. You recall the basic objective of a small finance bank? As I told you, differentiated banking. So, what is the basic objective of a small finance differentiated banking? इस स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करना. अब यहां पास अगर वो क्रेडिट अवेलेबल करा रहा है तो ये पर्टिकुलर कंडीशन किस चीज में हेल्प करेगी? So that it does not go on providing loans to those who already have a lot of means to repay it. Okay, so it will be loans in a smaller amount. That is the point. Okay, so how many of the statements are incorrect? यहाँ पास ये हो गया, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट खत्म हो गया. कौन सा स्टेटमेंट ये होगा? एक 25 लाख और दूसरा वो, तो एटलीस्ट 50%. दैट्स third statement was also incorrect because that limit 25 lakh is not for 2/3 of the amount but half of the amount. Okay, so 50% है. तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? First statement incorrect, second correct, third incorrect. Okay, so only two, B option. If reverse repo rate is increased by 100 basis point, तो reverse repo का concept क्या है? The rate at which banks park their funds with RBI. If it is increasing, that means encouraging the banks to park more funds with RBI. Okay? So banks may feel more interested to deposit their excess reserves with central bank. Easy to answer. Yes, sir, any doubt here? Money supply in the economy will increase. I think now you can answer it. It will decrease actually. Loans will become cheaper to the public. Inflation shall be stabilized. So I think that answers it. Okay. With reference to financial instruments, consider the following statements. Exchange traded funds are traded on the stock market like regular stocks, while mutual funds are traded at the end of market day. Okay, so exchange traded fund behaves like a stock. During the day trading, you will see that its price is going to fluctuate, just like a stock's price is going to fluctuate all day. ठीक है? और म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है? एक बार लास्ट में, okay, evening में. Yes, that is the correct statement. That its price keeps on fluctuating. Exchange traded funds are, next statement, are generally considered more tax efficient for investors compared to mutual fund scheme. ये समझ में नहीं आया. हाँ. Okay. So always express this, what she is saying. मतलब क्या आपने सोचा, क्यों सोचा, ये थोड़ा सा. तो दिस इज अ करेक्ट लाइन ऑफ थिंकिंग. अगेन कितना अच्छा दिमाग काम कर रहा है. कुछ पुराना याद किया होगा, है ना, कि इनकम टैक्स सेवर्स फंड्स होते हैं. ओके, फोन पे खोला आपने, यहाँ पास दिखा रहा है इनकम टैक्स सेवर्स फंड्स. बट इट इज नॉट अबाउट choosing that mutual fund which is going to give you income tax concession. It is about in the design of mutual fund and ETFs. ठीक है? So exchange traded funds are generally considered more tax efficient for investors compared to mutual funds. That is the correct on, because understand what happens, that mutual funds में NAV के basis में सब decide होता है, और यहाँ पास in kind securities के basis में भी exchange होता है. So that is going to give you more option actually. So if that is confusing, just add 2-3 lines what I'm dictating. Write down, in case of ETFs, creation and redemption. Understand? In case of ETFs, creation and redemption process, redeem karna process involves in-kind transfer of securities. Involves
in-kind transfer of securities, which is minimizing the taxable events, which minimizes the taxable events, okay. While in case of mutual funds, securities have to be sold, attracting the capital gains tax. Has to be sold, attracting the capital gains tax. तो समझे आपने एक्चुअली क्या दिमाग लगाया, वहां पास गलती क्यों की? दिमाग ये लगाया कि वो एक पर्टिकुलर फंड है 5 साल का, ये जैसा कि आपके दिमाग में होता है कि सब्सक्राइब टू दिस फंड एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस मच. इट्स अबाउट डूइंग दैट एक्टिविटी ऑफ बाइंग और सेलिंग ETFs और बाइंग और सेलिंग म्यूचुअल फंड. वो पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना. उस पर्टिकुलर केस में आपके पास जब वहां पास कैपिटल गेन्स हो रहा होगा, दैट कैपिटल गेन्स इज गोइंग टू बी टैक्स्ड. दैट इज द पॉइंट. ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट. With reference to marginal standing facility, consider the following statements. This facility is available to all the scheduled banks. Okay, correct hai. Collateral is not required for borrowing under MSF provisions. If collateral is not required, it will not be called borrowing. It will be something else. Tell me anything. Koi bhi rate hai aap? Yeah, this is about marginal standing facility rate. There are instances where you will find that in base rate no collateral is required, but now you know that yes, collateral is required. A different kind of collateral is required there. Okay, so yes, collateral is required very much in this case also. It's just that the securities that you have kept to meet SLR requirement need to be unencumbered securities, unpledged securities. But if they are being pledged as collateral in MSF, then that doesn't mean that bank is not meeting the SLR requirement. That means even those securities which are there in SLR can be pledged to borrow under this rate, and that is not going to disturb your SLR requirement. Okay, very much understandable because this is an overnight lending. Yes or no? Overnight lending. तो आज वो securities pledge किया, कल पैसा देके फिर से आ गई securities. ठीक है, तो इस तरह से तो MSF काम कर रहा है. मतलब ये है कि SLR में क्या करते हो आप? Cash, gold, G6, but those G6 should not be pledged, but can be pledged in MSF because it is overnight lending. Acha, MSF rate is generally higher than repo rate. You understand? If they do not keep it higher than repo rate, will you ever resort to repo as a bank? हाँ, मतलब यही है कि भाई बहुत जरूरत हो तो करो. दूसरा पार्ट नहीं सुन पाया मैं. Exceptions. I haven't come across any explicit exception. This is actually for commercial banks. This kind of buying and lending actually is for commercial bank because उन्हीं के पास इतना क्या कहना चाहिए, इतनी जरूरत होती है कि ये कॉल मनी रेट भी है और रेपो है, रिवर्स रेपो है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें एक ये और दे दिया. तो नॉट नो एनी एक्सप्लिसिट लिस्ट देयर, बट कैसे क्या गलत इंटरप्रेट किया? तो फिर सबकी अगर शी अंडरस्टैंड what she's saying, she says that she consider that those banks which will be in crisis and not all will be able to access it. That is मतलब ये इतना क्यों दिमाग लगाना? Because if that is the condition, then there will be a race among banks to show themselves in crisis, so they could access it. Okay, कोई नहीं, ये रिवाइज करने से हो जाएगा सब कुछ. With reference to Nipah virus, I think you can do that. So no vaccine, zoonotic disease, सही है, दोनों सही है. Which one of the following is likely to be the most inflationary in its effect? I think this is from PYQ. So repayment of public debt,
borrowing from public to finance budget deficit, borrowing from banks to finance a budget deficit, creation of new money to finance a budget deficit, creation of new money to finance. Okay, so that is the most inflationary thing. Let me reframe this. Borrowing from RBI to finance the budget deficit. अब बताओ A, B, C, D. Now D option has been reframed. Borrowing from RBI to finance the budget deficit. The question remains same. Which one of the following is likely to be the most inflationary? Huh? D. बताइए. A. This is what is written. This is actually the explanation of this. Okay? मतलब समझो इस चीज को. The same thing has been written in different format. हाँ? समझ रहे हो इस चीज को? RBI either is going to print it or release it from its vault. In both cases, it is a new money. Okay, so just remember this. Acha, in case of high inflation in the economy, okay, should government borrow? In case of high inflation, मतलब high inflation का मतलब कि problematic situation है. Should the government borrow money? Government should borrow from public. Should not borrow from RBI. RBI से नहीं करना है ना? ये चीज है. Because deficit financing typically happened in this manner, whereby government borrowed money from RBI. So how else RBI would see? Understand? One is that issuing treasury bills, issuing data securities, all that. Okay, ways and means advances, and borrowing from RBI, not ways and means advances. Means what? RBI has to give money now. From where RBI will manage money? By printing it, by releasing it from vault, जो प्रिंट करके रखा है. अरे अलमारी, तिजोरी मतलब कि प्रिंट करके सड़क में तो नहीं रखा होगा ना, सामने नहीं रखा होगा तो वॉल्ट पे रखेगा. अच्छा चलो कंफ्यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जानते हो आप है ना, डेफिसिट फाइनेंसिंग बहुत इन्फ्लेशनरी होता है. That is the problem, that it is not backed by any particular asset, any guarantee. तो यहां पास प्रॉमिस ये है कि भैया हम लौटा देंगे. अंडरस्टैंड? डेफिसिट फाइनेंसिंग को थोड़ा सा और समझ लो. Who mints the coins? गवर्नमेंट है ना, जो आरबीआई ही करती है, लेकिन गवर्नमेंट. तो 1 रुपी कॉइन को मिंट करना, दिस इज डेफिसिट फाइनेंसिंग और नॉट? 1 रुपी कॉइन को मिंट करना भी एक्चुअली उसी का पार्ट है. दैट इज द क्रिएशन ऑफ न्यू मनी. Okay, understand that. Okay, consider the following statement about the ways and means advances. Okay, ways and means advances. Where do you study that? कहां पढ़ते हो आप ways and means advances में? ठीक है, किस इंस्टांस में पढ़ते हो? This is like a overdraft facility, yes or no? A fixed amount. Now that can be, earlier what used to happen? Government would have estimated that it is going to make 100 rupees this particular quarter, and that is why I can go on spending 100 rupees. But government is spent, managed to get only 70. And then expected that in the next quarter it is going to earn 130. So borrowed money from RBI, but in the next quarter it happened that it could not earn, it could not receive 130 rupees. So whatever amount was borrowed from RBI, government could not return it. It was carried over to the second quarter and third quarter and fourth quarter also, ultimately leading to monetization of deficit. It's a situation whereby you are asking your Airtel or Jio, you don't have balance, give me 10 rupees. ठीक है, अब उसने 10 रुपीज दे दिया आपको, एयरटेल ने, आपके पास 10 रुपीज का रिचार्ज आ गया, पैसे नहीं दिए आपने एयरटेल को, ठीक है. अब वो 10 रुपीज भी आपने खर्च कर दिए.
अब बोल रहे हैं एयरटेल से 10 रुपए और दे दो, ठीक है, यहां पास एयरटेल आरबीआई है, गेटिंग इट? सो पहले एयरटेल दे दिया करता था 10 रुपए, अब पहले आरबीआई दे दिया करता था। अब वेज एंड मीन्स एडवांसेस का मतलब क्या है कि नाउ Airtel is not going to give you more than 7 rupees. Once that 7 rupees has to be paid back, and then you can use this again. That is the facility. Overdraft facility. Getting it? You understand overdraft? You don't have money in your account. You can withdraw 500 rupees. Okay, and then you deposit 1000 rupees, so 500 rupees will be deducted. This is the ways and means advance. Okay, so rate of interest charged for WMA is same as repo rate. That is correct. Limits on WMA are fixed by FRBMA Act. हाँ? नहीं, ये गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में लिमिट सेट हुई है. ओके, वेज एंड मींस एडवांसेस आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली टू फंड इट्स फिस्कल डेफिसिट बाय द गवर्नमेंट. एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली ना, ये कौन सी बात हुई? तो वो फंड डिसाइड कर सकता है. फिस्कल डेफिसिट तो वैसे भी बोरोइंग है, तो वो एक्सक्लूसिवली नहीं, वो उसके लिए नहीं होता है. सो दैट इज नॉट द केस. ओके, इट इज फॉर एनी काइंड ऑफ डेफिसिट दैट इट इज फेसिंग where it has to spend money. Okay, with reference to financial sector in India, consider the following statements about NBFCs. Unlike banks, NBFCs cannot accept demand deposits. Demand deposits. Okay, understand what defines bank. Financial institution में आप पढ़ते हो banks and non-banking financial institutions. तो demand deposit का मतलब क्या है? Withdrawal on demand. So NBFCs can offer many kinds of deposit, but not demand deposit. There are deposit taking NBFCs. आप जानते हो उस चीज को. So that is correct. Second, cannot issue checks drawn on itself. Correct है? Are not covered under Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation's deposit insurance facility for depositors. Because when you are covered under this, then you have to follow so many provisions. Okay, getting it? Then cannot acquire securities issued by the government. Or even retailers can acquire, retail investors can acquire securities. Why not NBFCs? तो ये चीज 1, 2, 3 ये क्या है? ये सही है, और फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इसमें एक चीज समझ में आपको आनी चाहिए कि एनबीएफसीज पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का इंटीग्रेटेड वे में पार्ट नहीं है. दे आर नॉट पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन एनी इंटीग्रेटेड मैनर लाइक बैंक्स. ओके, बिकॉज अगर उसका पार्ट नहीं है तो फिर वो सारी चीजें जैसे नेफ्ट, आरटीजीएस, वो सारा कुछ होता है, वो सारी चीजें इसमें अप्लाई नहीं होंगी. ओके, बिकॉज पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम प्राइमरली बैंक्स के द्वारा ही मैनेज किया जाता है. ओके, सो next, with reference to Indian economy, which one of the following correctly describes the meaning of the term first loss default guarantee system? First loss default guarantee system. अब ये नए टर्म्स हैं, लेकिन इतना इकोनॉमी पढ़ रही हो ना, तो just look at the word, understand the meaning and match with the alternative. कई बार तो लगता है कि प्रीलिम्स एक्चुअली नॉलेज का नहीं, वो पूरा का पूरा आईक्यू का. हाँ, वो कैबलरी आईक्यू, यहाँ सही बोल रहे हो. तो इसमें इसी तरह मैच कर लेना आपको, अगर नहीं भी पता होता है तो देखो ना, फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी. डिफॉल्ट की गारंटी टाइप का कुछ, लॉस है, डिफॉल्ट है, उसकी गारंटी का कुछ है ना. तो a guarantee extended by third parties to reimburse financial institutions for loan defaults by borrowers. बहुत स्ट्राइक कर रहा है, सही है ना. एंड एश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस कंपनीज टू reimburse प्रोजेक्ट डेवलपर्स ऑफ रोड प्रोजेक्ट्स फॉर फाइनेंशियल लॉसेस. दिस इज सिंपली इंश्योरेंस, है ना. व्हाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी? This is simply insurance. An arrangement enabling banks to sell borrowers collateral in case of the first instance. An arrangement enabling banks to sell borrowers collateral in case of the first instance of default. You recall सरफेजी एक्ट, इसके लिए कोई गारंटी नहीं, वो साफ साफ सरफेजी एक्ट ने फ्रीडम दे रखी है. और ना सिर्फ इतना, डीएम हैज टू इंश्योर दैट दिस हैपेंस स्विफ्टली बाय सरफेजी एक्ट. बच्चा एक चीज है, पढ़ के जाओगे ना अच्छे से रिवाइज करके, कॉन्फिडेंटली डिलीट करते हो ऑप्शंस को. बस यूपीएससी आपसे ये कॉन्फिडेंस चाहता है, समझो इस चीज को. अच्छा पढ़े हो ना, उस बेसिस में डिलीट करो ऑप्शंस. रिकॉल दैट कि दिस इज समथिंग दैट डीएम हैज टू इंश्योर एनीवे अंडर सरफेसी एक्ट. ओके, एंड नाउ बिलीव दैट व्हाट यू हैव स्टडीड. एक तो सबसे बड़ी दिक्कत पढ़ते टाइम यही यकीन नहीं होता ये आएगा भी कि नहीं आएगा.
अब वही आता है, और अगर वो नहीं भी आता है तो द थिंग इज दैट ऑन दैट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज, दैट सॉलिड नॉलेज दैट यू हैव, you will delete the options and you will infer the correct one. This is prelims. Okay. For example, 11th क्लास में एनसीईआरटी की बुक है रिवर्स मेंशन सिम्बल्स, वो नई रिवर्स पूछेंगे, नई रिवर्स सुन के आप डर जाओगे, बट ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ रिवर्स इन दैट बुक यू विल बी डिलीटिंग द ऑप्शन. जस्ट टेस्ट इट, जाके घर में करके देख लेना, और यू विल अराइव टू करेक्ट कंक्लूजन. दिस इज प्रीलिम्स, इसी बेसिस में टेस्ट कर रहे हैं. बेहतरीन स्टेज है, मैं कहता हूं, बहुत अप्रिशिएट करता हूं इससे मैं यूपीएससी को, क्योंकि इससे अच्छा टेस्ट किसी का क्या हो सकता है कि वॉट एवर यू हैव स्टडीड, हैव फेथ, कॉन्फिडेंस इन दैट, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज अटेम्प्ट दिस. दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू टू डू. ओके, बिकॉज they know what you have studied. What they want you to do is study it properly and be confident about it. Okay, so revise it properly and be confident about it. अब पढ़ते वक्त ही होगा क्या पता ये आता है कि नहीं आता. अरे वो आए ना आए उसके बेसिस में आपको आंसर करना है कि नहीं. ये है प्रॉब्लम. सो ये ध्यान रखना, इसको बहुत अच्छी स्टेज होती है. लग रहा होगा रोलर कोस्टर में बैठा है ना कि नहीं, बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड होती है ये प्रीलिम्स. अभी नहीं लग रहा तो अभी लगेगा, अभी थोड़ा और जैसे अप्रोच करोगे लग रहा है. Consider the following C's and just look at the globe. Okay. 26. Consider the following actions. Selling of G6 under open market operations. पहले पढ़ लो क्वेश्चन क्या है. How many of the above mentioned actions may increase the money supply in the economy? MS increase करना है. तो सेलिंग ऑफ G6, सेलिंग ऑफ G6 मतलब G6 गया मार्केट में, पैसा गया, इसने G6 इशू किया है. G6 went to market and money went from market to issuer. The MS will decrease. Yes or no? Borrowing by the government from RBI. Borrowing by the government from RBI. आ गया ना? Okay, so it will actually go to the market because government is going to spend it. Correct. Increasing reserve ratios limits for banks by RBI. Reserve ratios limits by banks. तो जैसे रिजर्व रेशियो लिमिट क्या हो गया, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स जो है, ओके, उससे क्या होगा, मोर रिजर्व लेस मनी. सिंपल है. रिड्यूसिंग द पॉलिसी रेपो रेट. पॉलिसी रेपो रेट, the key instrument, credit control measure. Reducing means increasing the MS. Simple है. हेलो सर, सिंपल है ये. Reducing policy repo rate. तो क्या होगा, बढ़ेगी ना मनी सप्लाई. सिंपल है. क्यों क्यों गलती हो गया, ये सिर्फ गलती होगा जब आप अपना डिनर ब्रेकफास्ट लंच प्रॉपर नहीं करेंगे. ठीक है, ये और किसी भी तरह गलत नहीं हो सकता. मतलब माइंड में ऑक्सीजन ग्लूकोज की कमी थी, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि आपको समझ में नहीं आया ये. हाँ तो फिर समझे ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ है खाने पीने में, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा. नहीं तो इसमें क्या गलत हो गया, अगर ये गलत करके आओगे तो फिर गड़बड़ है ना. ये तो सब सही करेंगे. एक चीज और, प्रीलिम्स में वो कभी गलत नहीं करना है जो तुम्हें पता है कि सब सही करने होंगे. With reference, okay, I think this is the question now. No, yes, no, 27. With reference to payment banks, consider the following statement. They can take maximum deposit of 1 lakh rupees from an individual customer. That was the case earlier. 2 lakh rupees now. है ना? They need to maintain statutory liquidity ratio as mandated by RBI. Correct है. They cannot issue debit cards to customers. Debit card क्या होता है? अपने deposit money को debit करना है, और क्या है? Why they will not be? They cannot accept the time deposits from public. Correct है ये. Okay, तो पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्रिपेयर करा रहा है आपको ये क्वेश्चन. Okay, with reference to PSL, consider the following statements. Urban cooperative banks. ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, PSL होता है उसमें, होता है. कितना होता है, 40%. When all that was being done, regulatory supervision was being made more strict. That actually was increased. Okay, so it was made to be 75%. Regional rural banks, 75%. Non-banking financial companies, foreign. I think this is easy, huh? Foreign banks में भी होता है. Okay, so 29. ये informative थे कुछ questions.
Okay. With reference to the practice of loan write-offs by banks, consider the following statements. This question, okay, just look at it. Read the statement properly और बहुत अच्छे से उसको underline करना, circle करना, ये सब करना है, ठीक है ना? The practice of loan write-offs by banks enables them to clean up their balance sheets by removing non-performing assets. Write-off करने का मतलब ये है कि NPA हटा दिया उसको. Loans that are written off are categorized as lost assets because bank forfeit their right to reclaim these loans from borrowers. Right to forfeit, bank forfeit to claim this fund. Okay, their right to claim. अरे यार आसान कर दिया. अधिकार ही खत्म कर रहा हूं मैं तुमसे नहीं मांगूंगा. Okay, that is too much to say. Okay, that is not the case actually. Lost asset का मतलब ये नहीं होता कि banks right को lose कर रहा है. Bank is still in the hope that somehow it will be able to manage it. Okay, bank will never lose that hope, and no obligation can be put over bank to lose its right to reclaim what it has given. Getting it? तो मतलब ये अधिकार खत्म करना नहीं है. इस चीज को समझना, इस चीज को. Okay, so that is the incorrect statement. They are actually categorized as lost assets, but banks do not lose the right. They are always in the hope of recovery. So first statement is correct, second statement is incorrect. नहीं, वो एनपीएम अब उस तरह से नहीं कंसीडर किया जाएगा. वो उसको लॉस्ट एसेट मान रहे हैं. लॉस्ट एसेट मान रहे हैं, लेकिन लॉस्ट एसेट का मतलब ये नहीं है. हाँ तो नहीं, लॉस्ट एसेट का मतलब ये नहीं है कि कोई भी एसेट ऐसा नहीं होता बैंक का जिसमें वो राइट क्लेम छोड़ दे. हाँ मतलब कि देयर विल बी अ डिपार्टमेंट वर्किंग इन दैट प्रोसेस कि हाउ इट कैन बी रिकवर्ड. Okay, 30. With reference to Parliamentary Select Committee, consider the following statement. Parliamentary Select Committees. These are ad hoc committees, which means it will be dissolved once the purpose is served. Ad hoc committees. Parliamentary Select Committees यही होती हैं. As per the Rajya Sabha rules procedure, only a minister may move an amendment stating that a bill be referred to a select committee. So the very purpose of those creation of those committees is this, that the distinction between the government and other members in the house could be erased. Okay, party politics, partisan politics, all that could be erased, and the actual work could be done. Putting this restriction would mean what? Violating this intention. Yes or no? Opposing this intention. So yes, that is allowed by private member also. Okay. Next, the chairperson of the committee is elected by the members of the committee from amongst themselves. ये chairperson वगैरह हमेशा कहाँ chairperson ही house के appoint करते हैं. That is by chairperson of Lok Sabha, Raj Sabha. मतलब speaker of Lok Sabha. Okay, so that is 31. In India, central banks function as the lender of last resort, usually refers to which one of the following? Lender of last resort. Lending to trade and industry bodies when they fail to borrow from other sources. So central bank क्या इनको lend करता है? गलत हो जाएगा ये. Providing liquidity to banks having a temporary crisis. Lending to governments to finance budgetary deficits. Lender of last resort actually ये काम है. मतलब 1 and 2. Okay. क्या है? आंसर गलत भी है क्या? B. Answer is B. 2 only. अरे इसका मतलब ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट नहीं होता है. ये इसका मतलब है lending to governments to finance budgetary deficit. This is the task of RBI as government's bank, not lender of last resort. So RBI is government's banker also. So as a banker, it is doing that. Huh? तो प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू बैंक्स हैविंग अ टेम्परेरी क्राइसिस, क्योंकि भाई परमानेंट क्राइसिस है तो वो फिर हेल्प नहीं करने वाला है, वो उसको मर्ज कर देगा. तो क्राइसिस टेम्परेरी है, इसलिए जब कोई टेम्परेरी क्राइसिस है तभी तो, क्योंकि अगर परमानेंट क्राइसिस है तो अब वो परमानेंट क्राइसिस के लिए बैंक, इसलिए आरबीआई थोड़ी ना खड़ा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा बैंक खड़े हों. वो तो बैंक्स का काम आसान करने के लिए. व्हेन नो वन इज लेंडिंग देन आरबीआई स्टैंड्स देयर. दिस इज नॉट द केस बिकॉज दिस इज बैंकर्स, दिस इज आवर गवर्नमेंट्स बैंक, इसलिए ऐसा कर रहा है. कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्शंस.
रिगार्डिंग द क्रेडिट कंट्रोल मेथड, पहले देख लो क्वेश्चन क्या है. हाउ मेनी ऑफ द अबव ऑप्शंस आर मेथड्स ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और इसके अलावा क्या होता है? जनरल क्रेडिट कंट्रोल. ओके, मतलब क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव. सेलेक्टिव का मतलब स्पेसिफिक और वो जनरल. ठीक है, तो क्वांटिटेटिव आर सेलेक्टिव while qualitative are general. ठीक है ना? So I think that answers the question. How many of the above options are method of selective? That means quantitative. So credit rationing. Credit rationing का example क्या है? What is the example of credit rationing? PSL. Very good example of credit rationing. So PSL is for any particular. No, it is not specific. No, or it is specific. अरे PSL रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक है, क्रेडिट राशनिंग तो सबके लिए होती है ना. नेक्स्ट है मोरल सुएशन. मोरल सुएशन वेरी मच जनरल. रेपो रेट एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी. तो रेपो रेट एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बोथ आर वेरी मच क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव. क्रेडिट राशनिंग इज क्वालिटेटिव. ओके, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड हियर इज क्वांटिटेटिव. नहीं समझ में आया? चलो ठीक है भाई. क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव, द अदर इज क्वालिटेटिव. सेलेक्टिव किसको बोलते हो? क्वांटिटेटिव को. हाँ, एक मिनट, मैंने क्या बोला? आई विल रिपीट दिस पॉइंट. सेलेक्टिव किसको बोलते हो? जहां पास किसी पर्टिकुलर सेक्टर स्पेसिफिक काम हो रहा हो. क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स जो क्वांटिटेटिव होंगे, जैसे रेपो रेट, इसमें क्रॉस द सेक्टर काम होगा. ठीक है ना? ओके, मेरे ख्याल से शायद मैंने उल्टा बोल दिया. मैं फिर से समझा दे रहा हूं. जैसे रेपो रेट है, इट इज क्वांटिटेटिव. इफ रेपो रेट इज चेंज्ड, द इफेक्ट ऑफ दैट चेंज विल बी सीन अक्रॉस द सेक्टर्स. दैट मेक्स इट जनरल. दैट मेक्स इट जनरल. ओके, एंड देन जैसे पीएसएल है, वेरी मच स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर. तो क्वालिटेटिव क्या हो जाएगा? क्वालिटेटिव हो जाएगा जो सेक्टर स्पेसिफिक हो. ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक हो. आई थिंक दैट एक्सप्लेन्स इट. ओके, तो स्टेटमेंट 1 में क्या है? क्रेडिट कंट्रोल, वो करेक्ट हो जाएगा. स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो जाएगा. स्टेटमेंट 3 और 4 इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज 3 एंड 4 क्या है? क्वांटिटेटिव है और वो सेक्टर स्पेसिफिक होंगे. ओके, लास्ट में आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स में मोरल सुएशन के साथ साथ डायरेक्ट एक्शन वगैरह भी आता है, सीलिंग आती है, और इंटरेस्ट रेट इस सेक्टर स्पेसिफिक में चेंज करने के लिए भी होता है. जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर मेथड्स लाइक डिफरेंशियल लेंडिंग नॉर्म्स, तो वो भी मोरल सुएशन के साथ ही स्टैंड करेगा. ओके, विद रिस्पेक्ट टू फैक्टरिंग, differential lending norms, that stands with moral suasion, direct action, sealing. With reference to factoring, factoring को देखो, which one of the following are correct? Factoring का बहुत स्पेसिफिक, ये तो आंसर ही दिया हुआ है इसमें. Factoring का बहुत स्पेसिफिक मतलब ये है कि जो इनवॉइस अभी अनपेड है, उसको फैक्टर से डिस्काउंटेड रेट में यू कैन गेट द मनी, एंड देन द फैक्टर विल बी getting the money from those who have not paid their invoices yet, their payables. So it signifies the practice of selling invoices by a business to a specialized financial company or third party to fulfill short-term liquidity needs. Okay, so that is the answer. डेली बेसिस में बिजनेसेस ऐसा करते हैं. फुलरटन वगैरह जैसी कंपनीज हैं, तो दे ऑनर दैट. फैक्टर की तरह काम करें. इनवॉइसेस का मतलब बड़ी बड़ी इनवॉइसेस का. अब वो लगातार बिजनेसेस हो रहे हैं, तो फुलरटन ने आके क्या कर दिया? आपको पे कर दिया. तो 100 रुपीज का इनवॉइस था. अगर आपका कस्टमर आपको इसे 100 रुपीज अभी दे देता, तो आपके पास 100 रुपीज आते हैं. तो आपने 100 रुपीज का इनवॉइस आपने फुलरटन को 95 में बेच दिया. अब बाद में फुलरटन ने इससे आपके कस्टमर से 100 रुपीज ले लिए. तो आप एज अ कंपनी, आपको क्या प्रॉफिट हुआ? कि 100 रुपीज नहीं आए, चलो 95 तो तुरंत आ गए. और इस तरह की कंपनी किस तरह में एडजस्ट कर रही है? कि 5 रुपए का मार्जिन जो उन्होंने ऐड किया यहाँ पास. Consider the following statement with reference to NEFT and RTGS mode of transfer. Funds, RTGS transactions happen in real time gross settlement, है ना? NEFT transactions operate in deferred settlement. NEFT is done in that manner. Unlike RTGS, there is no minimum transfer value in NEFT. ठीक है, तो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम वगैरह में सब आप पढ़ते हो, RTGS, IMPS, NEFT, वो सारा कुछ लिमिट वगैरह देख लेना, 2 लाख रुपीस वगैरह सारा कुछ.
नहीं, मैंने कहा कि लिमिट्स लिमिट्स वगैरह देख लेना, अपर लिमिट लोअर लिमिट 35। ओके। इफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अडॉप्ट्स accommodative स्टांस, ओके। अरे टर्म सही क्लियर है, क्या होगा accommodative का मतलब क्या है? व्हाट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू accommodate? नो 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 सर, बताएं। accommodative इंस्टांस में व्हाट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू accommodate? द नीड ऑफ द इकोनॉमी टू एक्सपैंड फर्दर। क्या accommodate कर रही है? द नीड ऑफ द इकोनॉमी टू एक्सपैंड फर्दर। ओके, देन आई थिंक दैट आंसर्स। कोई स्टेटमेंट होगा जो इसको सपोर्ट कर रहा होगा। So RBI is prepared to expand the money supply. बहुत easy हो गया इससे तो। Expand the money supply to boost economic growth. Accommodative stance का मतलब ध्यान रखना कि it means RBI is ready to accommodate the need of the economy to expand. Okay, just remember this. This is information, huh? 38. With reference to PACs, consider the following. PACs कहाँ पढ़ते हो आप? When you study different tiers of cooperative banks, yes or no? So PACs are there at the lowest. याद है? So they function under the purview of Banking Regulation Act. Banking Regulation Act. हेलो, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है ना? बैंकिंग रेगुलेशन एक बैंक्स के लिए तो होता है, तो क्या दिक्कत है इसमें? हमेशा ध्यान रखना कहां पढ़ते हो, कोऑपरेटिव बैंक्स में। और कोऑपरेटिव बैंक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट्स के तहत चलते हैं, ठीक है ना? तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट्स हैं उसके लिए, डिफरेंट गवर्नमेंट्स के। देन नेक्स्ट पॉइंट है, दे प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म क्रेडिट टू फार्मर्स। शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म क्रेडिट, इसमें ओवर थिंक कर सकते हो ऐसे। फार्मर्स फार्मर शॉर्ट टर्म में कहां दे पाएगा, वो तो लॉन्ग टर्म में देगा, नहीं लंबे टाइम के लिए। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है ना? लॉन्ग टर्म का मतलब होता है डेवलपमेंट के लिए दिया जाने वाला। तो फार्मर कहाँ बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, उसको शॉर्ट टर्म में ही चाहिए होगा। अभी ये खरीदना है, हाँ फर्टिलाइजर खरीदना है, ये सर। ओके, with reference to debt recovery tribunals, consider the following statements. They are established under Surface Act 2002. सरफेसी में पढ़ा है यहाँ डीआरटी ना? नहीं, तो सरफेसी में नहीं है ये। नेक्स्ट है, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ डीआरटी इज अपॉइंटेड बाय, अच्छा बाय द वे व्हिच एक्ट इज देयर? ऑल्दो आई थिंक एक्सप्लेनेशन में मेंशन नहीं होगा, रिकवरी ऑफ डेट्स है ना, एंड बैंक्रप्सी एक्ट। सेकंड है, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ डीआरटी इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट, करेक्ट। They have the power of civil courts, like summoning and enforcing the attendance of any witness at the tribunal. Correct or incorrect? That is how they function. Okay. Informative था ये, आपको टफ लग रहा था ये क्वेश्चन पेपर? मैंने बोला कि इजी है, तो आप बोल रहे थे कि नहीं इजी नहीं है। कुछ क्वेश्चन से नहीं दिमाग में बता लेना है, ठीक है ना? कि क्वेश्चन पेपर मिला आपको वहां पास सेट डी, और सेट डी में शुरू में टफ क्वेश्चन है तो पेपर हो गया टफ, ऐसा कुछ नहीं करना है वहां। यार हमेशा ध्यान रखना, प्रीलिम्स में इतने क्वेश्चंस आएंगे जिसकी वजह से आपका निकल जाए। देयर विल बी एनफ क्वेश्चंस दैट यू विल सेल थ्रू इफ यू डू करेक्टली, है ना? बात ये नहीं बच्चा कि आपने प्रिपेयर किया है कि नहीं, समझो इस चीज को। बात ये है कि आप प्रिपेयर करने के बाद वहां कैसे करते हो। मेनी टाइम्स यू मेक दिस मिस्टेक ऑल्सो, यू लूज द होप कि दिस टाइम आई कुड नॉट रिवाइज वेल, ठीक है? दैट लक्ष्मीकांत चैप्टर इज मिसिंग, करंट अफेयर्स इतना सोचा था कवर नहीं कर पाया, ये सब फर्क नहीं डालता उधर। ओके, द डे यू आर अटेम्प्टिंग दैट, you are applying your mind, your logic, presence of mind or not, that is something which is going to decide. No candidate can say that I am satisfied with the number of revisions that I have done. पॉसिबल नहीं है इतना ज्यादा, है ना? पॉसिबल नहीं है। तो ये यूपीएससी, अब देखो, विद दिस परसेप्शन दैट यू हैव नॉट रिवाइज एनफ, यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट यूपीएससी प्रीलिम्स विद दिस परसेप्शन, वहीं वो डरा देता है, अरे यार रिवाइज तो है नहीं, पता नहीं कहां से पूछ लिया है, ठीक है ना? वो तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक्स है ना, उसी से पूछ रहा है, उसको डायरेक्टली नहीं। कैसे? आपने वो पढ़ा है, उसके बेसिस में आंसर करो, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है? उसके बेसिस में आंसर करो, नहीं तो तुम अगर ये डेयरिंग नहीं दिखाओगे, इसी पीवाईक्यूज को भी इसी बेसिस में एनालाइज करो, रोज एवरी डे यू हैव टू डू पीवाईक्यूज। ओके ओके।
Okay, just you can just see it. Okay. 41. In the context of finance, the term beta refers to covariance of return on investment and the return of market divided by variance of return on investment. मतलब एक स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में कैसा कर रहा है, क्योंकि आप इन्वेस्ट कैसे करते हो स्टॉक में और उसको कंपेयर कैसे करते हो मार्केट से. तो जैसे when you studied elasticity equals to 1, greater than 1, less than 1, उसी तरह बीटा की वैल्यू भी होती है, बीटा equals to 1. So then the return on investment, covariance on return on investment and market is equal to variance on return on investment बराबर परफॉर्म कर रहा है. Greater than 1 means numerator is higher and less than 1 numerator is lower. ठीक है. So that is the case, a numeric value that measures the fluctuation of a stock to change in the overall stock market. That is beta. अब देखते हैं इसमें. With reference to Insolvency and Bankruptcy Board of India, consider the following. It is a statutory body established under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Correct? हाँ भैया, statutory body. It functions under the administrative control of the Ministry of Corporate Affairs. Corporate Affairs? Ministry of Finance होना चाहिए? नहीं. कंपनीज के लिए है भैया, कंपनीज के लिए है वो, है ना, उनकी बैंक्रप्सी को. तो करेक्ट. इट कंडक्ट्स एग्जामिनेशन फॉर एनरोलमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स इन इंडिया. एक्चुअली मेन वही टास्क है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को मैनेज करना, एजेंसीज को मैनेज करना, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, ये सारा कुछ देखना. तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. Consider the following statements regarding T+0 trade settlement cycle recently introduced by Securities and Exchange Board of India. Okay, hello. Before we had T+5, T+3, T+1, T+0, what did we have? बताओ, इसके पहले क्या था हमारे पास? जब ऐसा नहीं था तो क्या था? There used to be something called badla settlement. You understand badla settlement? Huh? You had this option of carrying over your deferring the payment, है ना? Deferring the payment मतलब आपको लॉस हुआ, आप बोलेंगे अभी नहीं देंगे स्टॉक मार्केट को, ठीक है? बदला, तो बदला का एक कमीशन लगता था, बदला, इसे उसको बोलते बदला. मतलब मैंने, बिकॉज आई एम डेफरिंग, आई विल पे बदला. Getting it? But badla system promoted this defaults, the cases of defaults. Okay, because it promoted over speculation. Because you have lost money, now somehow you want to make it. So what you will be doing? You'll be making incorrect decisions, है ना? You will be over speculating. So badla system was replaced by this rolling settlement system. T+5, T+3, T+1, T+0. Transaction day plus 0. मतलब settlement उसी दिन, है ना? ये फायदा इसका. Under this system, securities and funds will be settled by the next day of the trade. That is T+1. Yes or no? That is T+1. So not next day, it is same day. The settlement system may lead to lowering of overall transaction cost of trading for both investors and brokerage firms. Correct? Very much correct. What is the reasoning? Lowering of the transaction cost. What is the reasoning? See, whenever such kind of transactions are made, when it is being settled not on the day when it was traded, then there are always some chances of facing losses. Okay, and to cover that losses, there are cost premiums. Because the transaction is going to be settled on the same day, the organizations or companies in question are not going to pay any premium cost or cost premiums. So that is going to further reduce the cost, transaction cost, cost premiums, everything, and the whole process will be streamlined. Streamline होने की वजह से क्या होगा? डिले नहीं होगा, डिले नहीं होगा तो भाई सेटलमेंट जल्दी होगा, सेटलमेंट जल्दी होगा तो डिलेज ना होने से ट्रांजैक्शन कॉस्ट उससे भी कम हो जाएगी. मतलब पूरा का पूरा ऑपरेशन विल बिकम स्ट्रीमलाइन, इजियर. अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ रही है तो कॉस्ट कम होगी, सिंपल है. यस और नो? ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ रही है तो कॉस्ट कम होगी, सिंपल है. हाँ प्लीज बताएं. बिकॉज डिले में होता क्या है कि द नेक्स्ट डे व्हाट दे आर गोइंग टू फेस, द सिचुएशन दैट दे विल बी हैविंग, कि उस स्टॉक की प्राइस क्या हो गई, उस स्टॉक का नेक्स्ट डे सेटल हो रहा है, उस स्टॉक की प्राइस क्या हो गई, उस स्टॉक की, तो वहां पास नेक्स्ट डे में हो सकता है कि उनको कुछ लॉस हो रहा हो सेटल करने में, और उस लॉस को कवर करने के लिए वो कॉस्ट प्रीमियम्स देते हैं, उसमें इंश्योरेंस वगैरह करते हैं. तो कॉस्ट प्रीमियम्स वगैरह उनको पे नहीं करनी है.
उस दिन के हिसाब से, लेकिन उस दिन के हिसाब से पेमेंट उस दिन नहीं हुई ना, पेमेंट तो अब दूसरे दिन हो रही है। तो पेमेंट दूसरे दिन हो रही है तो दूसरे दिन दूसरे बिजनेसेस हो रहे हैं, लेन देन हो रहा है। समझो इस चीज को। Just forget about this market. Imagine yourself as a raw material supplier, where you are supplying stones, boulders. आज मैंने खरीदा आपसे, आज 500 रुपए का खरीदा, आप 500 रुपए सेटल हो गए, 500 रुपए आपके पास हो गए। ऐसा कल कल हो सकता है कि आपके बोल्डर्स वगैरह का पता नहीं, वो ट्रक पीछे से गायब हो गया हो, कल आपके पास 500 रुपए नहीं हो, या मेरे पास नहीं हो। मतलब समझो इस चीज में बहुत सारी चीजें होती है ना। या कल बोल्डर्स की सप्लाई जो है बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गई हो, तो आपके बोल्डर्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो कस्टमर्स नहीं आएंगे, कस्टमर्स नहीं आएंगे तो फिर आपके पास 500 रुपए देने के लिए होंगे नहीं। ये सारी दिक्कतें हैं। दिस इज व्हाट आई एम रेफरिंग। आर यू गेटिंग दिस, इमेजिनिंग इट? दिस इज द सेम प्रॉब्लम। मैंने अब स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इमेजिन करना, क्योंकि आप ट्रेडर तो है नहीं, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। यू आर सप्लाइंग बोल्डर्स, द वेरी नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दैट बोल्डर, what are the hurdles in the supply of that boulder, both from the customer's point of view as well as seller's point of view. There are so many cases which can arise, making it difficult. Transaction day में ही अगर settle हो जा रहा है तो अच्छा, in order to avoid all that situations, what you will do, you will insure this, yes or no? So there will be someone who will be insuring it and will be asking for premiums. Now you have to settle it on the same day. You will avoid all that cost that you are incurring in form of cost premiums. ये मतलब है। हाँ, इसमें ओवरऑल लॉस। और दूसरी बात कि टू अवॉइड दीज लॉसेस दैट मे अराइज इन फ्यूचर, दे विल डू सर्टेन अदर स्पेंडिंग। नाउ दैट दे विल नॉट बी एबल टू, दे विल नॉट नीड टू, okay, so they need not to go for any such alternatives to reduce the loss, because it has to be done on the same day. अरे जल्दी समझो इस चीज को, आसान है, ठीक है ना। कभी कभी ज्यादा आप डिबेट कर दें। ओके, थर्ड है, इट मे मेक इंडियन मार्केट्स मोर कॉम्पिटिटिव ग्लोबली। एक्चुअली दैट इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई इट इज बीइंग डन, ओके। Especially the foreign investors, they want to get it settled on the same day, so will make the whole market more attractive for the foreign investors also, especially foreign investors. Okay, next है, consider the following statement regarding the consequences of including the financial institutions in the prompt corrective action framework. Okay, so prompt corrective action framework, it limits the branch expansion efforts to these financial institutions. When PCA framework is applied, that is going to be the case, limits the branch expansion, because branch expansion जिसके ऊपर PCA framework अप्लाई हो रहा है, वो क्या, वो कौन सा बैंक होगा जिसका CAR का डामाडोल होगा कि नहीं, मतलब जिसमें कैपिटलाइज, the level of capitalization would be low, other metrics would not be very attractive, बहुत अच्छी नहीं होंगी। तो उसको एक्सपैंड करने के लिए कैसे अलाउ कर दिया जाए? It prevents these financial institutions from investing in government securities. No, why not? Okay, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए गवर्नमेंट का जो बैंक है, मर्चेंट बैंकर, वो क्यों मना करेगा? It provides these financial institutions with more independence in governance matters. अरे गवर्नेंस में ही तो कुछ गड़बड़ हुई थी, तब तो PCA लग रहा है। It requires promoters, shareholders to inject more capital into these financial institutions. That is very much a step required in that direction, because ultimately at the core of such crisis would be what? Inadequate capital. Yes or no? Okay, with reference to term short selling, recently seen in news, always in news, इसमें क्या है ना? Consider the following statements. In India, SEBI has prohibited all forms of short selling. हाँ, ये तो बड़ा क्या हेलो दिक्कत है इसमें। मान लीजिए नहीं पता कि सेबी ने प्रोहिबिट किया है कि नहीं, लेकिन जो पता होना चाहिए वो क्या था, शॉर्ट सेलिंग क्या है। तो शॉर्ट सेलिंग ईमानदारी से बताइए, याद था? नहीं याद था, ये गड़बड़ बात है। जो नोटबुक में है वो तो होना ही चाहिए। ओके, अरे सेबी वुड प्रमोट any kind of speculation if it is not over speculation. Getting it? Why it will prohibit? अगर शॉर्ट सेलर्स को प्रोहिबिट कर दिया, मतलब क्या है कि स्टॉक मार्केट के कितने सारे लोग अब बोलेंगे कि हम क्या करें, हम तो शॉर्ट सेलर हैं, है ना। स्कैम 1992 देखिए, नहीं नहीं, चलो नहीं देखिए। ओके ठीक है, स्टेटमेंट 2, शॉर्ट सेलिंग इन्वॉल्व्स सेलिंग अ स्टॉक दैट द सेलर डज नॉट ओन एट द टाइम ऑफ ट्रेड, दैट इज व्हाट इट मींस। ओके, and then buying it when its price is lower, that is what he was expecting, it may be higher also, and returning it to the broker. Okay, अब सी है क्या? Okay, so this is done. Any doubt? This was good. Okay, informative था, क्योंकि इसमें informative शायद इस वजह से बनाया क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है बहुत इजी है। So instead of making it completely conceptual, they made it informative. So that was good.
ओके, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें इजी है, उसमें ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो अच्छे से रिवाइज करना। ओके, तो व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, मतलब द नेक्स्ट टॉपिक क्या है जिसमें टेस्ट होगा? टैक्सेशन वगैरह है। ओके, तो रिवाइज करो अच्छे से। ओके, टैक्सेशन वगैरह रिवाइज करो, अपने नोट्स के डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हो। इट्स नॉट जस्ट दीज क्वेश्चंस। ओके, यू कैन आस्क एनीथिंग दैट यू हैव इन योर नोटबुक।